Hello guys, a very good evening to all of you. Welcome back. In this session we are going to continue with our series based on important reports and indices. Okay, so I hope I'm clearly audible to all of you. So please quickly join in and do mention into the comment section so we can start our today's discussion. Okay, so every Saturday I usually come up with a report or indices. So today's report is something around the academics. Okay? So it is known as academic freedoms. Okay, the report is based on 179 countries, and again in this particular report also, India's performance is bit poor in last one decade, right? So like the ranking or the scale is 0 to 1. 0 is worst and 1 is best, and India's overall score based on this particular survey is zero point 0.2. Earlier it was like in 2016 around, it was 2013-14 around, yeah, it was around 0.6. So now it is decreased to 0.2, right? So we will go through the entire report. What is the parameters? Basically there are 5 key parameters which are generally part of this particular report that we are going to discuss. Again, very small report, very important one. ठीक है? So report and indices जो बार बार आपको examination में, ठीक है? So this is something related to socio issues, ठीक है? Socio economic issues. तो वहाँ पे you can have a references as well, right? So and guys, from today onwards we'll have one another session at 7 p.m. ठीक है? So 7 बजे हमारा हर सैटरडे को एक सेशन होगा that is based on management. So today we are going to cover evolution of management theories. तो जहाँ पे हम लोग जो important management theories हैं उनके ऊपर आपके उनके जो concepts हैं as well as कुछ क्वेश्चंस आपका जिनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. सो डू नॉट मिस दैट पर्टिकुलर वन ऑल्सो, राइट? वो सेशन भी आपका यहीं पे होगा, एंड मंडे ऑनवर्ड्स we'll have regular session on our master classes also, that is 8 p.m. right? So today's report is in the name of Academic Freedom Index team. So Academic Freedom Index, it was basically released in 2023, and there was some update in 2024 itself, right? तो आपका थोड़ा सा न्यूज में था, दैट्स व्हाई आई केप्ट दिस पर्टिकुलर वन, राइट? परमेश्वरा सर, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? चलो, तो गाइस, very small report. I'll take around 10 to 15 minutes for this particular one. Okay. So if you talk about the Academic Freedom Index, okay, so this website offer information and analysis from the Academic Freedom Index, AFI. The AFI access de facto level of academic freedoms across the world. It is a unique approach to conceptualizing and measuring the academic freedom, and a collaborative efforts between FAU and VDAM. ठीक है? So FAU and VDAM, these are the institutes जिनके द्वारा basically ये आपका जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं इनके द्वारा आपका प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है? सो देयर आर 5 मेजर फैक्टर्स. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स वी जनरली इवेलुएट इकोनॉमीज. कंट्रीज की जो रैंकिंग है दैट इज इन बिटवीन 0 to 1. तो जो रैंकिंग आपका है वो 0 to 1. सो इट इज नेगेटिव साइड, इट इज पॉजिटिव साइड. मीन्स वी कैन से जो आपका 0 के जितने क्लोज होंगे दैट इज वर्स्ट साइड, एंड दिस इज बेस्ट साइड. ठीक है? So it measures actual level of academic freedom using 5 key indicators. First one is the freedom to conduct research in technology. ठीक है? तो जो रिसर्च एंड एनालिसिस या जो ओवरऑल रिसर्च आपका या जो टेक से रिलेटेड इनोवेशंस को सपोर्ट एंड अदर्स, दैट इज द वेरी फर्स्ट पैरामीटर्स. सेकंड वन इज फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एक्सचेंज एंड डिसमेंशंस. ठीक है? सेकंड वन इंस्टीट्यूशनल एटोनॉमी. ठीक है? सो बेसिकली आपका इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशंस आपका जो उनकी एटोनॉमी है अबाउट द डिसीजन मेकिंग इन अदर्स, अबाउट कोर्स करिकुलम एंड अदर एक्टिविटीज ऑल्सो. Then we have campus integrity, and the final one is the freedom of academic and cultural expression. ठीक है? सो ये जो आपका दो पार्ट है ना, इंडिया का जो ओवरऑल रिपोर्ट है या जो ओवरऑल स्कोरिंग है वो डाउन होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है आपका द फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन, फर्स्ट थिंग. अनदर वन इज आपका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज
आपका इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे लाइक इन पास्ट फ्यू इयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे कम अप विद सच रूल्स जो कहीं ना कहीं आपका थ्रू आउट इंडिया आपका कवर अप करते हैं, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो भी डिसीजन मेकिंग आपका पहले होती तो उनके ऊपर या कहीं ना कहीं वी कैन से उनकी जो ऑटोनॉमी है उसके ऊपर आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। दे आर नाउ कंप्लीटली रन बाय द सेंटर काइंड ऑफ, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग ये आपका, दूसरा ये अदरवाइज लाइक रेस्ट पार्ट इज फाइन, ठीक है। जैसे आपका दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव वन, ठीक है। सो अगर आप ओवरऑल रिपोर्ट को जाएंगे एंड देयर आर सम references which are generally given about these particular thing like जो आपका जेएनयू के अंदर जो इवेंट्स आपके होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस आपके हैं अदर्स, सो दीज आर सम पॉइंटर्स विच जनरली जिनकी वजह से हमारा जो ओवरऑल स्कोर है आपका दैट डाउनग्रेडेड फ्रॉम 0.6 टू 0.2 आपका, राइट। सो दैट इज द वन, ठीक है। सो दीज आर द 5 पैरामीटर्स on the basis of these particular parameters we generally rate economies, ठीक है, और countries आपका। So the interactive map above provide a comprehensive overview of academic freedom in 179 countries and territories in 2013, ठीक है। Based on the assessment of the de facto protection of academic freedom as on December 23, as of December 23, users can compare countries and investigate developments within countries over the time as well. So actual report was released for 2023, December 23, and there was some update in October 2024 itself, right? So the academic freedom index offer a distinct approach to understanding and evaluating academic freedom globally. So global public policy institutions, institute GPPI, in collaboration with the Scholar at Risk SAR and VDAM Institute of the Democracy. So these are the but basically the research or the overall surveys are generally conducted by these three different institutions, ठीक है। सो ये आपका जो इसका पार्ट रहेंगे, ठीक है। सो स्केल ऑफ रेंज, ठीक है, फ्रॉम जीरो, फर्स्ट वन इज जीरो इंडिकेटिंग कंप्लीट repression to 1. So 1 is indicating full academic freedom, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो ओवरऑल अकेडमीज जितने भी हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है उसकी जो रैंकिंग आपकी होती है दैट इज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। 0 इज वर्स्ट साइड एंड 1 इज बेस्ट साइड, ठीक है। सो स्कोर आर डिराइव फ्रॉम एक्सपर्ट सर्वेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, जिसमें वो 3 इंस्टीट्यूट जिनके भी हमने बात की थी। एनुअल रिपोर्ट पब्लिश एज पार्ट ऑफ द फ्री टू थिंक सीरीज बाय स्कॉलर्स एट रिस्क और सार, ठीक है। सो इंडियाज परफॉर्मेंस अगर हम लोग बात करें आखिरी पड़ाव का, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइक 2013 एंड 2023 इफ यू कंपेयर लास्ट और पास्ट 10 years, ठीक है, सो दिस वाज द वर्स्ट एवर, ठीक है, जहाँ पे आपका जो फ्रीडम एट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस इन अदर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, ठीक है। एंड दैट अप्रोच इज बिकम सेंट्रलाइज, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कहीं ना कहीं जो ऑटोनॉमी है उस पर थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं वो चेंज होकर आपका कमांड थ्रू सेंटर वाला जो अप्रोच है दैट इज जो यहाँ पे जिनकी वजह से ये इम्पैक्ट देखने के लिए मिला, ठीक है। सो इंडिया स्कोर ड्रॉप फ्रॉम 0.6 to 0.2 between 2013 to 2023, marking the lowest score since mid 1940s, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो काफी ज्यादा मतलब जो निगेटिव आपका इम्पैक्ट पड़ा है वो इंडिया के स्कोर के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। स्कॉलर्स एट रिस्क अ नेटवर्क ऑफ 665 यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड विच मॉनिटर ग्लोबल थ्रेट टू एकेडमिक फ्रीडम्स, ये जो सार है, ठीक है, स्कॉलर्स एट रिस्क, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका दुनिया भर की जो टॉप मोस्ट 665 यूनिवर्सिटीज हैं उनको मॉनिटर करता रहता है और उसमें बार बार आपका सर्वेज कंडक्ट करते रहता है, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं मतलब जो डेटा कलेक्शन या जो सर्वे वाला थिंग्स है दैट इज डन बाय दिस, ठीक है। So this is about the India's performance, and the performance is very poor. We reached around 1940s. So as per this, and this is a huge drop. ठीक है, मतलब 0.6 से 0.2 आना is a very huge drop. ठीक है, यहाँ पे भी again I'll say these two are the major one. ठीक है, तो सबसे बड़ा जो impact आपका पड़ा है अगर आप इस मतलब this is around
25 और 27 पेजेस रिपोर्ट, ठीक है। तो वहां पे अगर आप इंडियन इसको पढ़ेंगे, ठीक है, so freedom of the academic and cultural expression, this is one of the most reason. Another one is institutional autonomy, जिनकी वजह से आपका सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट, सबसे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है दैट इज आपका 10 भाई, ठीक है। सो ये इसका जो ओवरऑल स्कोर है दैट गॉट इंक्रीज इन पास्ट फ्यू इयर्स, ठीक है, और इवन इफ यू कंपेयर विद 2013 एंड 2023 इटसेल्फ, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल रिपोर्ट आपका, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बेसिकली अगर हम लोग बात करें, जो पूरा आपका जो समराइज वर्जन है आपका इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का, ठीक है, दिस इज इट। तो ये एक छोटा सा रिपोर्ट आपका, ठीक है, जिसको आज हमने डिस्कस किया। सो एवरी सैटरडे वी जनरली डिस्कस वन रिपोर्ट एंड इंडाइसिस में इतना ज़्यादा वेराइटीज नहीं होता है, ठीक है। सो जैसे पास्ट में हमने बहुत जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे आपका एसडीआई है या फिर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है या अदर्स, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे सोशियो इकोनॉमिक जो एरियाज है जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस इज द वन जो आपका कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग या अदर्स जब आप इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में लिख रहे होंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं ये आपको एज अ मतलब ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, उसके साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव में ये जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये आपका एक छोटा सा रिपोर्ट जिसको आज हमने डिस्कस किया। नाउ आई विल सी यू जस्ट आफ्टर at 7 p.m. ठीक है। So from today onwards we'll have 7 p.m. session, ठीक है, जिसमें नॉट द रेगुलर वन, ठीक है। तो आपका हर सैटरडे आपको मैनेजमेंट का एक यूनिट में आपको कराऊंगा, जैसे आज हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज, तो जिसमें आपका साइंटिफिक थ्योरी है या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है या फिर आपका कंटेंजेंसी थ्योरी है या थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई है। तो ये जो एरियाज है इनके फंडामेंटल्स आपका जो कॉन्सेप्ट्स है विच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल द रेगुलेटरी एग्जामिनेशन वेरेवर यू हैव मैनेजमेंट एज योर पार्ट ऑफ कोर्स करिकुलम, ठीक है। तो हम लोग सारे एग्जामिनेशंस को फोकस करेंगे, नॉट ओनली आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी के साथ साथ वो सेबी ग्रेड ए है या फिर आपका जैसे जो अदर एग्जामिनेशन जहाँ पे भी मैनेजमेंट का पोर्शन रहता है, तो विल कम विद द कॉमन टॉपिक, उन कॉमन टॉपिक को आपका उनके रिगार्डिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग और उनके ऊपर फिर एक आपका छोटा सा प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आई विल सी यू एट 7 p.m. गाइस, सो ट्राई आप लोग अवेलेबल रहिएगा। आई नो कि थोड़ा फेस्टिवल वाला टाइम चल रहा है, ठीक है, बट ठीक है, अब फेस्टिवल से बाहर निकलते हैं धीरे धीरे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई केप्ट दिस पर्टिकुलर सेशन ऑन सैटरडे इटसेल्फ, ठीक है। आई डू नॉट वांट टू मिस बिकॉज लास्ट वीक भी आपका ये होना था एंड देयर वाज लाइक एक एग्जाम मेरा था तो उसकी वजह से मैं आपका नहीं दे पाया था, ठीक है। चलो तो गाइज दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, आई विल सी यू एट 7 p.m. फॉर आवर मैनेजमेंट सेशन, ओके। सो दिस इज इट, बाय बाय, टेक केयर ऑल।